सबसे ऊपर टॉपिक ग्रेप्स दिखता नहीं दादा। अरे वीडियो कॉल है। ग्रेप्स खिला रहे हैं आपको। ग्रेप्स खिला रहे कहते हैं। हाँ अच्छा ग्रेप्स खिला रहे। पूजा करना है आज। हाँ निकल रहा है। क्या खा रही मैडम? भाजी चावल घी। हाय 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 तो बाप। हाई बोले तो ज्यादा ऊंचा। राधा राधा बोलो। प्रिंट आउट लिए प्रिंट आउट लिए। निकालो बेटा प्रिंट आउट। भाई याद से दे देना। कुकू जी क्या बोल रहे? ये लोग क्या खेल रहे थे देख? क्या दिख रहे नहीं उनको? बता दो। क्या आप दिख रहे हैं? क्या है ये? नहीं दिख रहा। हाँ नहीं, ब्लर ब्लर है पूरा, बहुत ब्लर है। फोटो भेज दो उससे शायद अच्छा। सिग्नल नहीं है बालकनी में शायद। क्या चिपक गया उसको नेट में? कीड़ा? इंसेक्ट है क्या? हाँ अरे वो सिल्क का था पहले। अच्छा बबूलिया बबूलिया। हाँ व्हाइट कलर का जो रहता गोल गोल। हाँ वो लाके दिया है तो। बस वही काम करो अब जंगल के। अरे कुछ एक्साइटमेंट बच्चों को। ठीक है। और जाते जाते क्या था? इनकी भाषा में। नया दीदी बोले पेज नंबर 45 सेल्स टेक्स्ट बुक। नहीं वो लिख दे ऑन द टॉप ऑफ द टॉपिक। हिंदी में है ना, उसको थोड़ा इंग्लिश के डायलॉग में कन्वर्ट कर दे और इसका रिप्लाई कर दे किसका। हाँ, वही रॉकिंग रॉकिंग में ये। टॉप मोस्ट है। सबसे ऊपर। कुछ भी नहीं। फफूलिये लाके दे दिए पापा। फफूलिये मतलब मालूम? वो नहीं बोली थी धतूरे में से निकलती थी, बोली थी क्या रास्ते में? कानी पाका में बताई शायद।
Hello, hi, hi. Why? What happened? क्या हो गया? अभी मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे जो आता है मैं बोल देती हूँ. I don't know. अब पी लूंगी बाद में. नहीं नहीं बिल्कुल. लाइक थैंक यू. आई अप्रिशिएट इट. अभी आप लोगों की ब्लेसिंग से ही तो हमारा काम चलता है. कोई नहीं, टाइम दे दो, ठीक हो जाएगा.
क्या मालूम, अब आप लोगों की ब्लेसिंग से ही मिला होगा तो है ना। आप भी, थैंक यू। Short glass rose. Hi, how are you today?
Of course, do you like have a link or do you need a link or something? Let me know. Although my coffee is right on the message above, I, I think I'll post that link as well. Oh my God. Hmm. Below are the instructions to complete the test. Mm-hmm. Okay. Mm.
It's 3 per question. It's 3 per question, but beyond that, that's on you. Sure. Got it. Thank you so much. I appreciate it so much, Ralph. You can ask your questions now. Sure. I understand. I remember those questions. Take message. One second, let me check. Leo season, July to August. Sure. No, you don't always have to be, active in chat. When I feel like maybe you're not here, I may ask, but beyond that, it's not required. But
I would say Leo season would be something you should really look out for when it comes to health. I would say around July to August, you can see a lot of improvement, you know. I believe July to August would be like 4 months from now. But yeah, that's when you'll be like almost healed, right? And give it a little buffer time, August to September. But yeah, beyond September, you'll be free from all that as well. But don't overdo it, okay? Take like deep breaths, you know. Sometimes it's okay to take breaks, okay? That's what you should keep in mind. Take breaks, don't overdo something. Maybe, you know, you're trying out different things, you're doing this, you're doing that, and like you're just trying too many things. Okay, like pick one thing and have complete belief over it, right? I think it was you I recommended Bajrang. um क्या था वो? हनुमान बाहुक तो yeah. हनुमान बाहुक. But a lot of this is also rooted in a lot of things like trauma, especially it can come from childhood. Okay. I recently saw a psychologist talking about it, that, you know, things like even strict parents can cause things like hormonal imbalance, you know, so a lot of trauma can also affect your health, which makes it difficult for you to heal as well. So, you know, work through that as well. Sit back, think that why do you feel triggered when a certain thing happens, you know, and try understanding yourself. Okay, be your best friend. Okay, give yourself the kindness and the friendship you expect from others, because at the end of the day, you're your best friend, right? When you were born, when you're writing your exams, or when you're going through lives, there's certainly times and spaces where, you know, it's only you, right? There's no one else who's coming to help. Okay, so you'll be here with yourself from the day you were born to the day you die, right? So it'll be very difficult if you're constantly at war with yourself, you know. Make yourself your best friend. It'll make life a lot better, okay? Another thing that can help you heal quicker would be balancing spirituality and practicality. Like I said, listen to Hanuman Bahut, right? Now, that is certainly going to help you, but you know, you also need like a medical plan for it, right? A medical treatment. So find that balance, okay? And don't be overwhelmed by the little details, okay? Look at this entire journey of healing as a whole. You're letting go of something. A part that has been in your life for so long is going away. You're allowed to feel what you're feeling, okay? As for the second question, okay, I do have a question. Have you ever tried interacting with this person before? Have you like tried getting help from this person before as well? That is something I need to know, so that, you know, I can understand what's going on better. Hi, Annapurna. Yes, it's like I would say July to August is when you'll see a drastic change, right? Like almost done. But like I'll just give you a little bit of buffer time till September. But like you have to keep all these things in mind as well. Mm-hmm.
But like, did you try seeking help in this regard from that person, from your Guruji? Like, has he helped you before? He or she, whoever it is. And like, did they help? Did it make any difference? It's good that you have a guru. It's good that they're helping you. But I see them healing you more in an energetic sense, you know. In I mean, whatever they're doing has worked a little, has helped you a little, especially more on the psychological end. But they need to, you know, change a little bit of what they're doing for it to, you know, really affect you. But they will help you, and you know, it'll cause like I said before, you know, why it's coming back is constantly because you had to, you know, go through that karma, you know, like people cannot just take away your karma. You have to experience it, you know, at least in some wavelength. And there's only so much a priest or a guru or a healer can do, you know. But again, I would suggest that you know, seek help from Lord Hanuman, you know. Like even in Hanuman Chalisa, there's that line, right? I forgot. Um, Nase rog hare sab pira, right? So, any negativity in life, Hanumanji is the best deity to go to. You know, बहुत जल्दी मान जाते हैं, and very easy to please, है ना? And plus, when I was reading for you even before, he came through. It's like उनको help करना है, आप help ही नहीं मांग रहे हो, है ना? You were served it. It's coming to an end. You know, it's almost done, but it'll really help if you seek help from Lord Hanuman. ठीक है? Like, I'm not gonna comment much on your Guruji, like, um, because that's not my place to talk. And but there's certainly a little adjustment that requires in things for it to actually really work, you know. And extra help can also be, no, see, that is just, no, don't lose hope, you know. The worst thing you can ever do is going through anything in life is losing hope. Okay, as long as you know, you can move mountains only if you believe in it, right? And Hanumanji specifically, I think there was this story I've heard. You know, when he promised Lord Ram कि you know, मैं जाके सीता माता को ढूंढ के लाऊंगा. वो बोले थे या तो मैं ढूंढ लूंगा या तो मैं पूरी लंका उठा के ला लूंगा. When they were sure that you know she's in Lanka. So for Lord Hanuman, giving up is not an option. You know, ऐसे नहीं तो वैसे रास्ता निकाल लेते हैं वो, ठीक है? So don't just give up.
Hi, Nikita. Giving up should never be on your mind, you know. Giving up or losing hope. I can understand. I feel that, you know. Uh, it's not the first time you're here. And like, I understand where you're coming from, but you know, it's uh, humans' belief, their hope, their it's one of the most powerful tools going through life, you know. That hope. It's like a very, you know, a very simple example would be, you know, how you go to bed being like, you know what, मैं ये कल करूँगी या कल करूँगा, because you know you're going to wake up tomorrow, right? That is subconsciously and consciously reinforcing the fact that you're going to be here tomorrow. You know, कल नहीं परसों करूँगा, because you know you'll be there, right? But again, I would say that, you know, it feels like, you know, how it's always the darkest hour of night that, you know, brings the sunrise after it, you know. Like, I think it would be good for you to, you know, look more into why this is happening rather than when this will go away, you know. Find the root of things, because certainly anyone can chop the tree, okay, but the tree that's still rooted in the ground will still grow, it'll still find a way to grow again. So if you really want to get rid of the tree, you have to look at the roots, you have to figure out why it's growing, how it's growing, you know. No, don't say that. I understand what you're going through and I understand what you're feeling, but listen, like giving up is like, you know, all of us agree to go through certain life experiences, you know. I can do that. If you want, I'll look into it. I don't mind. But as I was saying, what was I saying? भूल गई मैं. Yeah, all of, you know, as a soul, we agree to certain life experiences, you know. We're going to go through this, we're going to go through that. And, you know, when you give up on life and, you know, like you don't completely experience something, it's going to come back to you again because you are required to go through it. So giving up or just moving away from it is not going to give you any solution. You know, even with things like suicide, the same problem you're running away from will come back to you again in your next lifetime, you know. I don't mind doing it without it, you know. It's see what you do out of appreciation. I will certainly take it because, you know, we live in a very materialistic world when you need money for a lot of things, but that's not what I'm here for, you know. I'm here mostly because, you know, people need guidance. But I will look into the root, you know. If you want, we'll figure out why this is happening. If you want, we can go back, discover what happened, why this happened. Like, it can be a past life thing. So if you want, I can tap into it. I don't mind. You know, if you're comfortable, if you're
if you are ready to hear it. That would be one of the most important questions कि क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपने क्या किया जिसके कारण ऐसा हुआ. But if you want, I can look into the story of it. मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे ही बैठी थी, कर दूंगी. I don't mind. But yeah, things like healing. I used to do that, but one thing I noticed was whatever I was healing others from is something I was getting to experience for 1 week personally. So I was like, it's either you go through it or I. No, no, you don't have to. You don't have to. This is something I want to do for you. But beyond that, if you want to do, things like tipping and all that, that's on you. But I certainly don't need it. Okay, I just needed your consent that if you wanted to hear it or not. Yep, past life. Got it. It, one thing I can tell you is that it's not just one. It's more of a cumulated thing you've got. Okay, it's not just something that happened in like one life. Okay, it's happened in like you've done things in like two, three of them that's come like all at once. Just give me a minute, okay? It takes a little time to tap into that. Okay. Can you tell me what specifically you're going through, like what part? That is if you're comfortable. If you're not, it's okay. It'll just help me get a better understanding of things. But it all comes down to, what you're comfortable with. Mm-hmm. Are you drawn to any, god or deity in particular? Because, it feels like either you did something or you asked someone to do something, okay? More on the tantra mantra side, okay? Like tantra and like witchcraft, you know?
Um, Not even like the no, no, yeah, I'm talking about your past life, yes. That was something that had happened, you know. And it was not just one instance. No, I'm talking about the past life, the root cause, you know, why you are experiencing what you're experiencing. It could have resulted in, like, you know, parents either not being able to, you know, या तो बच्चा नहीं कर पा रहे थे या बच्चा होके नहीं, you know, बच पा रहा था. And like, या तो होता नहीं था, हुआ तो ज़्यादा रहता नहीं था, you know. And like it would happen multiple times, बार 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 बार. Mhm. I would say that is the major reason, you know, because of that pain during that extended period, you know, constantly. पहले तो इतना वेट करना, फिर इतनी उम्मीद रख के बैठना, फिर वो होने के बाद वो उम्मीद खो, यू नो, लाइक सब कुछ अच्छे से हो गया, फिर जैसी खुशियां ऐसे आने लगी उनसे वो छिन गई. एंड दैट वो कांस्टेंट साइकिल से जो पेन, जो यू नो दुख हुआ उनको, आई वुड से दैट इज लाइक द मेजर, यू नो, major cause of it. यू नो, लाइक ऐसे वेट करना कि यू नो अब आएगी खुशखबरी, अब आएगी अब आएगी. पहले तो आती नहीं थी, फिर आई तो यू नो इतना वेट किया कि होगा होगा होगा, इतनी खुशी आई, बच्चे को पकड़ा, यू नो खिलाया, जो भी थोड़ी दिनों की जो खुशी थी, फिर उनसे वो छिनी जाती थी, यू नो. वो जो दर्द हुआ उनके दिल पे जो गुजरी है, वो जो गोद सूनी रह जाने का जो पेन था, आई थिंक उसका बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है आप पे. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, राइट, दैट लॉस ऑफ होप. ये मेजर है, यू नो, लाइक ये आई वुड से 90% ये वो ही है.
और इनका जो फर्स्ट वाला हुआ होगा ना, वो ऐसे वेट करते करते ना ऐसे यू नो उम्मीद थी कि ना कहीं बच जाएगा, ऐसे वेट करे, धीरे धीरे उन्होंने ना ऐसे उसकी जान निकलते देखी है। लाइक उसका हेल्थ डिग्रेड होते हुए देखा है, प्लस लाइक वो जो जाती है ना वो दर्द से, जो धीरे धीरे करके वो पेलनेस आता है, वीकनेस आता है, वो जो देखा है उन्होंने, लाइक वो जो सब उनके लिए, लाइक वो साइकिल में वो जो देखा है ना उन्होंने, इतना उनका ऐसे इतना दर्द हुआ है ना, वो मुझे रोना आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई यू डिड दिस। ओके, किसी ने या तो करवाया होगा, ठीक है, या तो किसी ने करवाया होगा, या आपने खुद से ही चिढ़ करके या इनसे कुछ लड़ाई हो गई होगी इसलिए किया होगा, या कुछ भी हो सकता है आपका रीजन, वो मैं नहीं देख रही। मैं मेजर जिनका जो दर्द के कारण, जो सहने के कारण आपको जो हो रहा है वो बोल रही हूँ, ठीक है। इट कुड बी कि आप ना किसी को ऐसे पॉइजन भी दे सकते हो, कि लाइक आपने किसी को ऐसे पॉइजन दे दिया था, और उसकी फैमिली ने ये देखा है कि धीरे धीरे वो जो पॉइजन का इफेक्ट हुआ है वो बच्चे पे। इट कुड बी दैट ऑल्सो, या आपने मदर को ही दे दिया होगा। आई नो नाउ, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट अभी आप बदल गए हो, वो जो हो गया सो हो गया है। लेकिन कई बार ना, क्या बोलते हैं, कई बार जैसे आपको कुछ दर्द होता है और ना किसी का दुख महसूस करते हो, बोलने से भी हल्का हो जाता है ना दिल, कि क्या बोलते हैं, कई बार ना ऐसी चीजें सिर्फ उनको सुन ले कोई, उनका दर्द कोई समझ ले, उनसे ही उनको ना शांति मिलती है। इसलिए आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ है ना। सो देयर वाज दैट लॉस, दैट होपलेसनेस, कि ना मैं अब क्या करूं, मैंने सब कुछ कर लिया, ये फिर भी हो जा रहा है, फिर भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। दैट होपलेसनेस कि मैं कुछ तो कर दूं, कुछ तो पलट दूं, मैं किससे जाके क्या मांगू, लाइक इट फील्स लाइक बच्चे को लेके ये भगवान से मन्नत मांग रहे हैं, वो भगवान से मन्नत मांग रहे हैं, इस ये भगवान से बोल रहे हैं इसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो, ऐसे। लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। वो जो चिढ़ होता है, वो होपलेसनेस होता है, भगवान से भी गुस्से में बैठ जाते हैं कि ना ऐसे आप होने कैसे दे रहे हो, कि आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, हमने ऐसा क्या कर दिया, इसने ऐसा क्या कर दिया। तो व्हाट यू फीलिंग राइट नाउ इज व्हाट दे वर फीलिंग देन। आपके कारण से या आपके थ्रू जो पेन हुआ है वो बता रही हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि आप एक भगवान को ले लो, उनको पकड़ लो, ठीक है। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में भगवान से बड़ी तो नहीं होती, ठीक है ना। आई एम टेलिंग यू इट्स ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, क्योंकि वो जो सफरिंग था वो
उन्होंने भी इतना नहीं सहा था। आई थिंक 7 years मैक्स था वो, है ना। लेकिन फिर भी दैट पेन वाज सो मच कि थोड़ा तो वो होता है ना कि इंटरेस्ट पे आता है। बट यस कि जो भी प्रॉब्लम होती है भगवान से बड़ी तो नहीं होती। तो आप भगवान को पकड़ लो, ठीक है। एंड अगेन आई वुड से कि हनुमान जी बेस्ट है ये सब चीज़ों के लिए। आप ये मन में विश्वास बिठा के रख लो कि ना अब मैं ठीक हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। और ना अभी तो खत्म हो गया, मैंने भी सह लिया, उन लोगों ने भी सह लिया, अब वो कट गया है ना। इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल भीष्म पितामह, वो जब यस गॉड विल हेल्प मनाना पड़ता है। देखो एट द एंड ऑफ द डे हम भगवान के बच्चे हैं, है ना। अभी कोई भी माता पिता समझ सकता है कि ना ये बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको सहना है। लेकिन फिर भी माता पिता तो है ना कहीं तो मन फिर वो होगा ना शांत। जैसे भीष्म पितामह थे फॉर एग्जाम्पल, उन वो जब एरोस के बेड पे लेटे हुए थे, उनको जब वो पेन हो रहा था, तो वो बैठे बैठे अपने पिछले जन्म देख रहे थे कि मैंने ऐसा क्या किया जो मैं इस पे सफर कर रहा हूँ ऐसे। ही वेंट लाइक वो गए एक आई वुड से आई डोंट रिमेम्बर 49 था कि 99 था, ठीक है। हाँ, तो लाइक वो अपने 100 जन्म देख चुके थे। तो कृष्ण भगवान को पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने आई एम फेसिंग दिस, मैं इतना दर्द सह रहा हूँ, ना मैं मर पा रहा हूँ ना जी पा रहा हूँ, है ना। तो भगवान ने बोला इतने देख लिए, एक और एक देख लो। फिर पता चला कि वो एक राजा थे, वो वो लाइफ टाइम में, और वो जा रहे थे एक रास्ते से, सामने सांप आ गया। सांप तो सांप को खुंदलना नहीं है करके उन्होंने सांप को उठा के ऐसे साइड में फेंक दिया। हाँ, सैनिकों को बोला कि सांप को उठा के ऐसे साइड में डाल दो। उन्होंने डाल दिया वो कांटों में। तो उन्होंने फेंका तो वो जाके कांटे में बेचारा फंस गया। ना वो जी पा रहा था ना वो मर पा रहा था। तो उसकी जो वो पेन था उनको 101 लाइफ टाइम्स के बाद सहना पड़ा। तो भगवान अपना घड़ा नॉर्मल कर देते हैं। यस, तो ऐसे ना छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। किसका भी बुरा होता है ना, तो वो कर्मा का जो बैलेंस होता है ना, कर्मा ढूंढ लेती है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढती है कि मैं ये बैलेंस कैसे करूं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो जाता है, अपने आप होता है। पेन आपने दिया है तो पेन आपको सहना पड़ेगा, आपने खुशी दी है तो आपको खुशी भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन भगवान ऐसी चीज है जिन्होंने कर्मा बनाया है ना। तो भगवान को जब लोगे, उनको मनाओगे, तो कहीं ना कहीं तो वो हेल्प करेंगे ना। देखो इट्स लाइक और आप जैसे बोल रहे हो कि आपने सबको मना लिया, कोई सुनता नहीं है। It does. I have personally seen in my life as well. Countless times. मुझे किसी ने कुछ भी किया उसको डबल ट्रिपल होके जाता है। इसलिए ना जो भी ऐसे नहीं, डराने के लिए नहीं बोल रही ना, जो भी मुझे खुश रखता है भगवान उसको खुश रखते हैं। जिसने मुझे कोई भी मैटर में ऐसे दर्द दिया है उसको भी दर्द मिलता है, ज्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि वो दर्द से जाए, ठीक है, मैं सह लूंगी कोई बात नहीं। लेकिन वो जो विधि का विधान होता है वो भगवान का बैलेंस करना ही होता है।
ठीक है, जो आपने किया है आपको सहना ही होगा। भले ही आपको लगता है वो मैंने कब किया था, अभी तो मेरा नेक्स्ट जन्म हो गया, मैं ठीक हो गई, मेरा मन ऐसा हो गया, वो तो होना ही है। लेकिन आई वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स अबाउट वर्शिपिंग अ गॉड इज कि अगर आपके नो किस्मत में लिखा है, अगर आपके कर्मा में लिखा है कि आपको बहुत जोर का ऐसे हाथ में लगने वाला है, ठीक है, अब भगवान को मना लो, एक स्क्रैच से निकल जाएगा, लेकिन आपको वो होगा। आई एम नॉट सेइंग नहीं होगा, ज्यादा का कम में निकल जाएगा, लेकिन उतना शेल्टर करते हैं भगवान, आई सीन इट। ठीक है, आप, मैं बोल रही हूँ ना, आप हनुमान जी को लेके बैठो, ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट विथ राम नाम का जप। दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू प्लीज लॉर्ड हनुमान। उनके लिए राम से बढ़कर कोई है नहीं, ठीक है, तो स्टार्ट विथ राम नाम, मन में राम बिठा लो, मुंह में हनुमान बोल दो, ऐसे मान जाएंगे आपकी बात। वेरी इजी, क्योंकि हनुमान जी इज ऑल्सो भोलेनाथ का अंश, और भोले बाबा तो सब सुन लेते हैं आसानी से, ऐसे जल्दी से सुनते हैं, जल्दी से मान जाते हैं। And listen, like before you came, you can scroll up and chat. She came back 2 years after I did a reading for her. She told me कि आपने जैसे बोला वैसे ही निकला, 2 साल बाद आके बोलती है कि आपने 2 साल पहले जो बोला था वो ही हुआ, तो वो मेरी शक्ति नहीं है, मैं जो भगवान को मानती हूँ वो ही आते हैं, वो ही मेरे मुंह से बुलवाते हैं। तो मेरे भगवान का आशीर्वाद है, आपके भगवान का आशीर्वाद है, तो हो ही जाएगा। आप ऐसे टेंशन मत लो, ठीक है, होप कभी लूज नहीं करना है, ठीक है। आपने होप लूज कर दिया यानी आपने पूरा सब कुछ लूज कर दिया, लेकिन अगर आपके पास उम्मीद है तो आप सब कुछ हार के भी सब कुछ जीत सकते हो, ठीक है। आप एक चोट लगा के बैठ जाओगे, होप लूज कर दोगे, तो आप सब कुछ ऑलरेडी खो दोगे। आप सब कुछ लूज करके भी आप होप लगाए बैठोगे ना, जो होता नहीं है वो भी हो जाएगा। And if you want, you can check my Instagram also. There are countless reviews. और मैंने जो बोला है वो हुआ है, मैंने नहीं बोला मैं भगवान ने बोला, मैं क्रेडिट्स नहीं ले रही इधर, लेकिन वो ट्रस्ट जो होता है ना वो रखो आप, ठीक है, कि निकलेगा। आपने जो किया वो आपने सहा, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको ठीक करने की जिम्मेदारी भी उसकी है जिसने आपको इसमें इसके थ्रू गो थ्रू करने का वो दिया है ना। इट इज, आप वो होप रखो कि अब ऑलमोस्ट हो गया है, और जो बचा कुचा है वो हनुमान जी ऐसे ले लेंगे, ठीक है। और वो तो इधर ही रहते हैं ना, जहाँ राम नाम है वो आ जाते हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है वो आ जाते हैं, रामायण का पाठ होता है वो आ जाते हैं, है ना, ऐसे उठ के आ जाते हैं भगवान तो, हनुमान जी। ही इज इन द फिजिकल प्लेन, इतने करीब होके आपकी प्रॉब्लम ऐसे सुन लेंगे। भोलेनाथ को तो मनाने को साल लग जाते हैं, कई बार जन्म लग जाते हैं, ठीक है। आप बेसिक रूल्स फॉलो करो, जैसे नॉन वेज नहीं खाना, वो सब नॉर्मली होता है। अब वो मन में बैठा के रख लो, होल्ड दैट होप। खुद पे बिलीफ नहीं है तो मुझे और मेरे भगवान पे रखो, ठीक है, बिलीफ हो जाएगा। ऐसे होप नहीं लूज करते लाइफ में, ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम इंसान के पास होप ही है। देखो जैसे भीष्म पितामह थे, अगेन दिस एग्जाम्पल ओनली, वो भी भगवान की बहुत नियम से पूजा पाठ करते थे, लेकिन
सामने खुद विष्णु होके, श्री हरि होके, कृष्ण भगवान होके उनको भी सहना पड़ा ना। भगवान ने लिबरेशन दिया, करेक्ट है, लेकिन उनका कर्म, जो उन्होंने पेन दिया वो तो सहना ही पड़ा। तो आपको भी आपने जो किया है सहना पड़ेगा, और आप सह चुके हो, ऑलमोस्ट खत्म होने आ रहा है। अभी आप भगवान पे ऐसे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो, मुझ पे विश्वास रखो, जिस पे विश्वास रखना उस पे विश्वास रखो, ठीक है? सब ठीक हो जाए। होप कभी लूज नहीं करना लाइफ में। मैंने भी किया था एक टाइम पे। आई वुड से इंटर में माय पेरेंट्स वांटेड मी टू डू मेडिसिन, ठीक है, और मेरा मन नहीं लगता था मेडिसिन में। प्लस आई वाज वेरी सेंसिटिव टू टेक्सचर्स, जैसे गीला पेपर हो गया, मुझे बहुत उल्टी जैसा आता था बचपन से। तो आई अंडरस्टूड कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन आई वाज सो स्कैर्ड टू डिसअपॉइंट माय पेरेंट्स कि आई स्टिल वेंट थ्रू विद इट। मुझे इतना डर लगता था, आई वाज लाइक मेरा क्या होगा। नाउ लुक एट वेयर आई एम हियर, यू नो, आई एम हेल्पिंग ऑल दीज पीपल। मेरा लाइफ चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है भगवान की दया से, बढ़िया चल रहा है। आई मेट सच एन अमेजिंग कम्युनिटी, आई बिल्ट अ कम्युनिटी ऑन माई ओन। कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आई विल डू सच अ थिंग। लाइफ जब होप छोड़ते हो, दैट वाज अ वेरी डार्क टाइम फॉर मी पर्सनली। I had conversations with other people who were, I was like, what if I don't, what if, things end for me here, आगे क्या होगा and all that, what if आगे है ही नहीं कुछ। It was a scary time। मेरे को इतना mental pressure हो गया था, plus ना there was a lot of other things happening all at once, not just on career regards, also personal, family के through, so it was multiple things coming all at once, all down at once, but I didn't lose hope, and I'm glad I'm here today, you know I think you should also do that. Hold on to that hope, don't just give up, ठीक है? Because I would love to see you here again, I would love to be your friend, I would love to hear you talk, ठीक है? And don't feel like you're alone, because you're not. I'm here for you, you know we're an amazing community, very supportive people. Please hold on, किसी के लिए नहीं तो मेरे लिए कर लो, ठीक है? I would love to see you around, happy and thriving, which is what will happen, okay? So hold on. The very fact that you are coming here and asking about such things tells me you didn't lose hope completely. कहीं ना कहीं वो चिंगारी है, वो चिंगारी को फ्लेम बना लो, ठीक है? वो चिंगारी को फ्लेम बना लो, भले लकड़ी मैं दे दूंगी, ठीक है? बट होल्ड ऑन। नहीं, यू आर नेवर अलोन। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ठीक है? आई देयर वाज दिस, आई थिंक देयर वाज अ होमलेस पर्सन, उसने बोला था कि किसी ने पूछा था उसको, घर नहीं है क्या आपका? वो बोला पूरी दुनिया ही मेरा घर है। The entire world is your family, if you take it from a very personal perspective, ठीक है? जिस दिन आपका लाइफ एंड में आएगा, पूरी दुनिया भी आपके लिए एंड हो जाएगी, है ना? तो आपके लिए पूरी दुनिया आपके लिए तो एग्जिस्ट कर रही है ना? तो होल्ड ऑन टू दैट, एवरीथिंग अराउंड यू। जो सूरज उगता है, जो चांद उगता है, जो सूरज ढलता है, जो चांद ढलता है, जो तारे आते हैं, जो बारिश होती है, सब आपके लिए ही तो है।
but don't lose hope, you know. होप के बिना हम कुछ भी नहीं है, तो बना लो। किसने रोका? अभी बन जाओ। मैं बच्चा है। लाइक मेरी मम्मी भी, लाइक उनको ना, देयर so many times in her life when you know she felt like भगवान होते ही नहीं है, अब इनकी पूजा क्यों करूं, but she still held on and she's thriving now, you know. Like life still happens, we are still going through a lot of things and all that, but you know, हम हैं इधर। है ना। उनके दो बच्चे हैं, एक पति है ना। उनकी मम्मा भी है, उनके भाई भी हैं, बहन भी हैं, एंड आई लव हर, यू नो, आई लव माई फैमिली मोर देन एनीथिंग। उनके लिए तो मेरी जान हाजिर है ना। ऐसे ही नहीं मिलता ये सब, बट होल्ड ऑन टू होप, ठीक है। अब हमारे पास कुछ नहीं है लाइफ में, यू नो, जो मटेरियलिस्टिक चीज है, जो मिल सकता है वो छिन भी जा सकता है, बट आपका कोई भी एटीट्यूड नहीं ले सकता, आपका कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं ले सकता, आपका कोई भी कैरेक्टर नहीं ले सकता, आपका कोई भी होप नहीं छीन सकता। नहीं, हम धन्य हैं उनको पाकर। हमने ना जाने कौन से जन्म में क्या किया था जो ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। भगवान करे अगले जन्म में भी यही मिले, अगर हो तो। किस्मत में देखते हैं, लेकिन भगवान करे आप भी मुझे संतान रूप में मिल जाए फिर, है ना। बट प्लीज होल्ड ऑन, ठीक है। किसी के लिए नहीं तो मेरे लिए कर लेना, ठीक है। होल्ड ऑन। बट लाइक इवन बचपन में माय मम्मा वाज सो स्ट्रिक्ट। हाँ पक्का, श्योर श्योर, करो करो, मैं तो ऐसी बात किए जा रही हूँ। लाइक स्ट्रिक्ट थे एंड लाइक वेरी फिजिकली एंड इमोशनली अब्यूजिव एज वेल। टाइम के साथ वी गॉट बेटर, यू नो, आवर रिलेशनशिप गॉट बेटर एंड ऑल दैट, लेकिन होता है थोड़ा ना। मैंने भी कुछ किया होगा, कुछ गड़बड़ की होगी, थोड़ा सह लिया, फिर ठीक हो जाता है। लाइक होल्ड ऑन टू दैट होप, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बेल्ट बेल्ट से पड़ी है मुझे। उसमें मैं रेज्यूमे हाँ बहुत मस्त पड़ा है मुझे। दे दो resume। नहीं, देख तो लूं। कुछ भी।
देखे, हमने लाइफ में इतना सब कुछ किया है, हमने लाइफ में इतना सब कुछ किया है। आपने क्या किया है आंटी? श्योर, पूछो, क्या क्वेश्चन है? वो 6 months वाला? सितंबर के बाद वाला लाइफ? बिल्कुल। पहले तो व्हाट आई कैन टेल राइट अवे इज, आप बहुत ग्राउंडेड रहोगे, बहुत हम्बल रहोगे। इसके बाद ऐसे आ जाता है ना कुछ लोगों में, क्या बोलते हैं, ईगो टाइप का, कि अब तो ठीक हो गई, अब पूरा भूल जाते हैं वो दे गो थ्रू, ये एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है आपके लिए कहीं ना कहीं। और ना, आपके ऊपर वो ईगो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा फ्यूचर में, कि ना वो जो क्या बोलते हैं उसको, यस यू विल बी वेरी हैप्पी, आप खुश रहोगे, आप ना ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओगे, कि ना यू विल बी ग्रेटफुल कि आप ना जिंदा हो, आपने वो होप पकड़ी रही, यू नो आप उसके लिए तो बहुत ग्रेटफुल रहोगे पहले तो। और आप बहुत हम्बल रहोगे, ऐसे कुछ लोगों में ना, ऐसे जब लाइक व्हेन दे गो थ्रू समथिंग इतना टाइम के बाद एकदम हील हो जाते हैं, तो उन पे बहुत वो आ जाता है, ईगो, कि ना मैं ये क्यों करूं, वाई शुड आई गो थ्रू दिस, आपने मेरे लिए क्या किया, मैं आपके लिए क्यों करूं, वो वाला नहीं रहेगा एटीट्यूड आपका। ठीक है, आप बहुत लाइफ में ऐसे ना जल्दी जल्दी ग्रो करना शुरू हो जाओगे, करियर वाइज, करियर वाइज आपका ना एकदम ऐसे जल्दी से ग्रोथ होने लग जाएगा, ऐसे जल्दी जल्दी सब कुछ ना ऐसे लगेगा कि जैसे ना सिंड्रेला की फेरी गॉड मदर, ऐसे वो उसका वॉन्ड हिलाती है और उसके फटे कपड़े सिल जाते हैं, वो कुछ कुछ बन जाता है ना, वो वो ट्रांजिशन ऐसे क्विक रहेगा आपके लिए, न जाने किसने आपका लाइफ ऐसे सुधार दिया टाइप का। और ना एकदम ऐसे ग्रहण के बाद जो सूर्य उदय होता है, इतना प्योरिफाइंग जो इफेक्ट होता है उसका, वैसा लगेगा, लाइक ग्रहण, एक्लिप्स इज अ वेरी डार्क टाइम। ठीक है, व्हेन एक्लिप्स हैपेंस, कोई भी ग्रहण होता है, ऐसे ना इट फील्स वेरी हैवी, ऐसे बहुत डार्क लगता है ना, वो डार्कनेस ऐसे एकदम उसको ना सन जब आता है नेक्स्ट डे, वो जो प्योरीफाई करता है ना, वो जो एकदम ऐसे लगता है ना
दिल से ऐसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, वो वैसा फीलिंग आएगा, है ना। आपका लाइफ भी वैसी हो जाएगा कि ना ऐसे ग्रहण लगा था, वो ऐसे उठा ना कि ऐसे एकदम वुश। ऐसे ना जो भी आपने मिस किया है ना, ये जब ग्रहण लगा था, yes you will, I think confidence is the first thing you will get, you know, life में कि ना you will stop caring about what, पहले तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज कि ना जब ये लोग, मैं जब ये सफ़र कर रही थी तब ये लोग मेरे साथ खड़े नहीं हुए, यू नो, जब सपोर्ट नहीं किए, तो इनको अब बोलने का, कमेंट्री करने का हक किसने दिया। वो एटीट्यूड जो आएगा ना कि मैं इनका पर्सपेक्टिव क्यों लूं, इनकी बात क्यों सुनूं, जब मुझे इनकी ज़रूरत थी तब ये लोग नहीं थे, तो अब क्यों आ गए यानी क्या हक जताने आए हैं, इनकी बात मैं क्यों सुनूं, इनका कुछ भी क्यों लूं मैं, यू नो, इनकी बात क्यों, यानी लाइक ऑब्वियसली अब खाई में कूदने जा रहे हो, किसी ने मना किया, क्यों लूं वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। मैं बोल रही हूँ जैसे कि ना ऐसी क्यों लगती हो, वैसी क्यों लगती हो, ये क्यों करती हो, वो क्यों करते हो, वो चीज़ों के लिए कि लाइक जब मुझे ज़रूरत थी तब आप नहीं थे, अब जब मैं खुद के पैर पे खुद खड़े हो गई हूँ तब आप आके क्यों उंगली कर रहे हो, मैं आपकी बात क्यों सुनूं वाला, यू नो, कि आपका कोई हक नहीं बनता है अब हक जताने का, ठीक है, जताने का टाइम चले गया, आपने वो मिस कर दिया। और जो ये टाइम में ना, एंडिंग एंडिंग में आप का पर्सपेक्टिव जो शिफ्ट होगा ना, कि खुद से वो जो गुस्सा है, वो जो चिढ़ है, वो जाके जब दोस्ती बनेगी कि लाइक मेरे ये डिफिकल्ट टाइम में मेरे साथ कोई नहीं था लेकिन कम से कम मैं तो थी ना, आई डिड द बेस्ट आई कुड, नो, फॉर मी, आई वॉज देयर फॉर मी, आई वॉज द ओनली वन हु वॉज देयर फॉर मी। उससे जो मेरी वाली दोस्ती होगी ना, खुद से खुद वाली दोस्ती, वो वो जो कॉन्फिडेंस देगी ना आपको, वो ऐसा कॉन्फिडेंस होता है ना कि किसी का छिने नहीं छिनता है। एंड इफ यू आर अलोन, इफ यू आर यू नो सीकिंग अ पार्टनर, वो भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ये सब ये होगा जैसे ही आपका ये जो लाइफ में ग्रहण पड़ा है वो जब निकलेगा ना, ये सब ऐसे ऐसे होगा कि ना, वो होता है ना, वो गाना है ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के वैसा लगेगा आपको कि ना जाने किसका ब्लेसिंग लगा है मुझे कि ना एकदम से लाइफ ऐसे भर गई है अबंडेंस से, यानी मैंने किस भगवान को ऐसे मना लिया, किस देवता का या देवी का ऐसे आशीर्वाद पा लिया कि यू नो मेरी लाइफ का काया पलट हो गया, एकदम ग्रहण ऐसे निकला है कि ना मेरा लाइफ ऐसे, सोचो गंगा नहा लिया वैसा जो हो रहा है। लेकिन आप इसके बारे में बहुत हम्बल रहोगे, वो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद आई थिंक आपका एक और एक लाइफ टाइम होगा
आने वाला, ये जो हम्बलनेस से आप ब्लेसिंग्स लोगे ना, उसके फल आपको, जो फ्रूट होते हैं, गिफ्ट होते हैं, नेक्स्ट लाइफ में इतने आएंगे, ये लाइफ में भी आएंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट लाइफ में ना आपको ऐसे लगेगा कि ना, यू विल फील सो लव्ड। अभी आपने जो भी खोया है, जो भी दुख सहा है, आपको ऐसे लगेगा कि इट वॉज ऑल वर्थ इट फ्रॉम योर सोल पर्सपेक्टिव। ठीक है, इतना प्यारा फैमिली मिलेगा, इतने प्यारे, यू नो, एवरीवन। नहीं, मुझे आपका हम्बलनेस बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची में। और ये जो अच्छा मुझे लग रहा है, इससे कई ज्यादा अच्छा भगवान को लगेगा। और इसकी ब्लेसिंग्स आपको सच्ची में मिलेगी, मैं बोल रही हूँ। लिख लो। और अगर आपकी इच्छा है कि आप ना खुद का घर बनाओ, वो भी बहुत जल्दी बनने वाला है। मुझे लग रहा है ना, ऐसे वाइट एक्सटीरियर होगा उसका, वाइट एक्सटीरियर दिख रहा है ऐसे ना, इंडिपेंडेंट हाउस टाइप का लग रहा है मुझे। अगर आपकी इच्छा है कि ना एक ऐसे इंडिपेंडेंट कर लो, तो वो भी होने वाला है। आपकी बहुत सारी विश फुलफिलमेंट है। अभी होल्ड ऑन, ठीक है। उसको देखने के लिए रहो इधर। ठीक है। आपके कर्म के फल भोगने के लिए तो रहो। जब नेगेटिविटी इतनी फैली है, तो उसके ब्लेसिंग्स, उसके पॉजिटिव साइड भी देख लो। ठीक है। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाय केती, हाउ आर यू? So hold on, see, there's so many things you have to live for. There's so many things worth living for, you know, don't just give up. लाइफ में अभी बहुत देखना है आपको, बहुत आगे तक जाना है। ऐसे ही नहीं भाग जाते, ठीक है। जब इतना नेगेटिविटी सह लिया, तो अच्छाई भी देख लो लाइफ की, है। ये तो ऐसा हो गया ना, रोलर कोस्टर में जा रहे हैं, पूरा बुरा डरावना वाला पार्ट देख लिया, जब चीजें अच्छी होने वाली है मूवी में, तभी छोड़ के भाग गए। क्या बात हो गई है? रुक जाओ, थोड़ा डर लो। फिर एंजॉय करना, खूब हंसना। और होप से करो, ठीक है। लाइक हैव दैट काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं, बिलीव रखो। होप तो क्वेश्चन मार्क भी हो जाता है कई बार ना, कि होगा नहीं होगा। वो बिलीफ रखो, और वो बिलीफ में ऐसे डटे रहो कि ये होने ही वाला है। तुम रोकने वाले होते कौन हो टाइप का, ठीक है। वो मन में रख के अगर आप प्रे करोगे, मनाओगे, जो भी करोगे, हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे गिव अप नहीं करते लाइफ में, ठीक है। शुड नेवर गिव अप। ठीक है। एंड इफ यू थिंक नोबडी केयर्स, रिमेंबर आई केयर, ठीक है।
मुझे खुशी होती है जब आपका नाम मेरे चैट में आता है, ठीक है। मुझे खुशी होती है जब आप अपने लाइफ के बारे में मेरे साथ शेयर करती हो। मुझे खुशी होती है जब आप आप मुझे अपना समझ के अपने प्रॉब्लम्स बताते हो, ठीक है। मेरी एडवाइस लेते हो, मुझे क्या बोलना है वो सुनते हो, ठीक है। मुझे खुशी होती है आपके सिर्फ रहने से। और लाइफ में कोई अलोन नहीं होता, ठीक है। मनुष्य है ही ऐसा जीव कि ना वो अकेले नहीं रहता, अकेले रह भी नहीं सकता। कम्युनिटी उसको बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। इसलिए हर बात पे सेलिब्रेशन करते रहता है, क्योंकि उसको लोग पसंद होते हैं, लोगों को देखना पसंद होता है। अब ऐसे में अकेले पड़ जाओगे, इफ योर नेचर इज टू बी अराउंड पीपल, इफ दैट्स व्हाट centuries before you were born happened, then then why can you think of the impact it will cause by you feeling alone? अपनी बहन माना है तो हक जताओ, ठीक है। जैसे दी बुला रहे हो वैसे मानो भी, ठीक है। एंड आई डोंट वांट टू हियर दैट यू आर अलोन एनी मोर, ठीक है। आई एम देयर फॉर यू, माई कम्युनिटी इज देयर फॉर यू, ठीक है। यस, एंड इफ नो वन इज गिविंग इट टू यू, कम गेट इट फ्रॉम मी, ठीक है। एंड आई नो आई कैन नॉट बी देयर ऑलवेज, दैट्स वाई गेट इट फ्रॉम गॉड, गॉड इज ऑलवेज देयर। मेरे पास कॉकरोच आ गया था। That reminds me that, when I was born, my mom used to call me cuckoo bird. I don't know why, don't ask me. And so, as time went on, cockroach, cuckoo bird became cuckooch. And my aunt took it as cockroach. तो अभी तक she teases me cockroach, cockroach करके. And as we were ending your reading, okay, um, glass rose, like I said, a cockroach flew. And cockroach ka, the main symbolism is rebirth. ठीक है? So that is another confirmation for you that things are looking up for you. Hold on to that hope. Okay? ठीक है? Hold on, ठीक है? ऐसे give up नहीं करते लाइफ में। मैं हूँ, भगवान है। एंड जो मैंने बोला है फुल विश्वास से करो, मैंने कुछ रेकमेंड किया है तो वो पक्का वर्क करने वाला है, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं करती, और मैं यूजुअली तो हेल्थ वाले रिलेटेड रीडिंग्स लेती भी नहीं हूँ। मुझे मन किया करने का तो सोच लो आप, ठीक है। आप अलाइनमेंट में हो किसी के साथ, मैं बोल रही हूँ वो किसी को मना लो, आपका लाइफ सुधर जाएगा। ओके, सॉरी फॉर अगेन, थैंक यू फॉर लेटिंग मी रीड फॉर यू, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग me with your energy, time and space, and I hope I'm given the honor to read for you again, and thank you so much for buying my readings and supporting me like that. Okay, I appreciate you. Okay, Katie, I'm so sorry for the delay. Let me get to your question. Okay, what's causing the delay? If you don't mind me asking, I think it's been like being delayed for a while, right? It keeps getting rejected or something. Does it keep getting rejected? Because I think you've been like asking this question like before as well.
Oh, but I remember you asking me something similar before. Your house loan. I think your mom's been trying to come here for a while, right? I think I remember you asking something similar, like, will your mom be able to come or something? But yes, it'll be approved pretty quickly. I don't think you have to wait for too long. Oh, I see, I see. But yes, it'll be approved very soon. But I think you need professional help for something. It'll be a quick one, you know. Don't worry too much. Very soon. I don't think you'll have to wait for too long for this. Sure. I didn't give you a lot of detail for it, so like if you want to ask two more, it's okay too. You know, I don't mind. You don't have to worry about it. It'll be done. Like I said before, you know, there'll be a shift in the mindset. You know, like it'll take his perspective from I have to do this to I get to do this, right? Like I have to love them as, you know, my stepkids to I get to love them as my stepkids, you know? Like love is not a very limited resource, you know. At core we are infinite love. There's so much we can love. It's not like we love look at one person and be like, you know, I can only love my mother or I can only love my father. We love so many people at once, right?
Same thing. Yes, you know how quickly his perspective changes. You know that more than you know that better than me, right? Like I said, if you do not establish that boundary with him, he's going to go around, he's going to go round and round and round the same circle, you know. Like, you know, it's more like both of you are going to grow a lot individually, like getting therapy and such. It's like both of you need to do a lot of growth apart from each other to be able to be together with each other, if that makes sense. Like both of you grow at different frequencies and different speeds. So like while he may, you know, heal from something, you may be healing from something else. So the wounds of two different kinds are going to be very fresh. So it's going to be very easy for both of you to be triggered, which is going to lead to things like argument and like being bitter and saying things you don't mean, which is just going to make coming together even more difficult, you know. But when you're completely healed and you're with each other, then not going to be any fresh wounds that, you know. I'm not saying you won't be together. I'm just saying what's ideal for both of you to, you know, be in a good, healthy relationship for a long time, you know. You cannot just say that you love someone and just move on from them, you know. I still love you, but you know, we're not meant for each other and all that. That's not how it works, you know. When you're in love, you are willing to put heaven and earth together, you know. You are ready to fight hell and back to be with that person. So, like when someone says, I love you, but there's no but, you know. When there's an I love you there and they truly mean it, they're going to put in the effort to act upon it. That's why he has to heal first, you know. There's a lot of open wounds, and like being around that person at such a time is going to, you know, be very difficult for you. He's going to be bitter about a lot of things, and like, you know, you're both triggering each other's insecurities and like poking at it and like just, you know, hitting where it hurts. That's why it's ideal for both of you to heal away from each other, you know, to be together with each other. Because I remember you were like, you know, see, if you both are together without healing, it's going to be kind of like a DNA, you know? Though I know it's not like DNA actually. Like the two strands of DNA, it looks like they come together and go apart and come together. It's going to be your situation, you know, if you're together without being healed. You know, you're going to drive each other crazy, and then there's going to be like, you stay away from me, and then, oh, I cannot live without you, and then driving each other insane. It's the same cycle going on and on. But if you know, sit down and heal from things, there's not going to be any insecurity to trigger, you know. There's going to be no room for the buts then. It's going to be like someone super glued both of you together. It's like, you know, how certain glues require you to, you know, cool it down a little
let it be a little out in the fresh air before you can stick it. That's exactly how. But like if you stick it prematurely, the glue comes out. See, that kind of an attitude is like what's causing that drift again and again, you know. Like, it'll be more stable, it'll be better for both of your mental healths as well, you know, if you both heal individually before being together. For example, you know, let's say both the parents are infertile and you know they keep trying for a baby. The baby is not going to happen. Both of them need to be put on individual, you know, treatments to heal themselves first. Then they try for the baby. That baby happens, you know. If one of them is healed, the other one's not, the baby is still not happening. I don't know why I said that, but yeah, that was like the first example that came to mind. That's a difficult question. um, let's see. I understand you need time to heal, and so do I. So, like, you know, and it's really difficult to be around each other when we're, you know, dealing with so many things ourselves. So, you know, I would like to, you know, heal individually first before I can be in this connection, and I hope you understand. Because listen, if like it's a turn off for him, which is it's not, like he's just like a man child throwing a tantrum about it, you know. Like he cannot let you go, but he's not ready to, you know, hold on to you either. But you know, some things are inevitable, you know. You cannot really run away from certain things. What is meant to happen will happen. So, like, both of you are meant to be together, both of you will be together. But it's just a matter of fact that, you know, how much pain it takes for both of you to be together. You know, like, there's only a certain amount of pain a human can take before they're like, you know what, I don't want to deal with this anymore. I need help. That mindset. Like, I'm sure nobody wants to, you know, like, for example, if someone got wounded, they're not going to, you know, try running around with a bleeding leg. There's only so much of that blood loss they can take, and they're going to be like, you know, I need help. Or, you know, if they let that bleed out, they're going to be forced to take that help. And right now, that's what he's doing. He's bleeding. So it's either he gets that help on his own or he'll be forced to very soon. Oh, thank you. I appreciate the support. Mhm.
Yeah, see, like, it's like a magnet trying to be like, hey, go away from me, The opposite poles attracting is just inevitable. There's only so much you can hold on to that magnet before, they get back together. He, it's like, trying to run away from destiny. See, you've got so many readings from me, have you not? And like, every time you've asked me that question and I said he'll come back, did he not come back? It's difficult for both of you to be away from each other, you know? It's really difficult. It's like trying to hold, like, again, the magnets apart from each other. It's not happening. But like, is that not the same story always? You have to, start taking his words with a grain of salt. He will, he will, he will. Like, just how both of you being together is an inevitable event. His healing is too. Ouch. 1 second. But like, so yeah, like you truly should stop believing everything he says. Because he's that kid, who'll like give 50 excuses rather than just owning up to something that happened. But like the same kids, going to go throw a tantrum about it, but then, get down at dinner time and be like, can I have this? I know I did something. Hi, भैया. क्यों था वेट? रस्ते पे नैन वे. But what else is inevitable for him? To be turning to God. That's inevitable. And like you'll play a really vital role in that. Yeah, like how both of you ending up together is inevitable. So is him turning to God, believing in God, And you're going to play a vital role in that happening. So don't worry about, like everything, as a reader, when I look at something, it's like I see this painting of both of you. Like if I am to look at this picture visualized, as a reader, a lot of things come to me in a more visual manifestation. I see a lot of things.
And when I see that, all these things that, it's like kids and, um, difference in belief and all that is just a small, it's not even the highlight of the painting. It's just there. It's on the side. It's like a side detail. It's like a tree maybe when the focus is on the woman. But what the focus is on is both of you healing, you know. That's the only thing that needs to be focused on and emphasized on for both of you. Everything else is just an excuse. It's like running away. It's like how it's like he knows that woman's there, but he does not want to. क्या हो गया? Sure. Sure, have fun there. And thank you so much for, trusting me with your energy, time, and space. And I hope I'm given the honor to read for you again. And of course, thank you so much for buying my readings. I truly appreciate your support.
श्योर, पूछ लो पूछ लो पूछ लो, हम तो बैठे ही हैं। पूछो पूछो। लाइक आई एम ऑल्सो क्यूरियस कि क्या हो गया ऐसा। See, I think I said this in like पहले भी कि ना बहुत इनसिक्योरिटी है कि मुझ में ऐसा क्या दिखेगा, कि ना उनका insecurity will really just push you away, and like for her to actually be in this connection, to be active in it, it'll take her some time, you know. वो insecurity से निकलेंगे कि हाँ मैं भी लायक हूँ। एक सेकेंड। सी, कई बार ना two individuals who are, you know, who are thinking about a future together or are in the energy of, you know, कि future में इनका कुछ होगा साथ में, कई बार mirror करते हैं, ठीक है। A lot of the times me and my person mirror each other in a lot of things. It is very common for two people to mirror each other, ठीक है। तो कई बार रीडिंग्स में अगर आपको लगता है कि ना ये मैं तो इनके बारे में पूछ रहा था, मेरे बारे में क्यों बता रहे हो, तो इट्स पॉसिबल कि उनको भी ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। So like unless she's moving past that insecurity, she's going to be in that energy कि मेरे साथ ये तो उल्लू बना रहा है मुझे, यानी मेरे पास कुछ है ही नहीं ऐसा कि you know that would actually attract someone like that, and you know that someone would think of pursuing a future with me. ये मुझे तो उल्लू बना रहा है, या हमको पागल बैठा के रखे हैं, वो है ना मीम, like that energy. बट थोड़ा टाइम लगेगा उनके एक्शन के लिए, ठीक है। ये न्यू स्टार्ट आने वाला है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा स्टार्टिंग में,
Because in her head you are playing around her. Okay, because in her head they are all not interested, you know, ऐसे normally, you know, सब उल्लू बनाते हैं एक दूसरे को, ऐसे ही छेड़ते रहते हैं, but for you she thinks you're actually, you know, playing around with her feeling, कि वो जो insecurity इतनी है कि ये real लगता ही नहीं उनको, she thinks it's a joke or something. ठीक है, but believe in the impossible. उनके एक्शन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा, बिलीव रखो. मे बी, बट वो बहुत इनसिक्योरिटी प्ले हो रहा है इधर कि यू नो ही कैन नॉट बी जेन्युइन अबाउट दिस वाला एनर्जी. एक सेकेंड, हाँ, एक मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ.
Oh, thank you, Glass Rose. लाइक जस्ट 1 मिनट, ठीक है? मेरा कल ना खूब प्लेसमेंट ड्राइव है, तो एक थोड़े 2-3 चीज़ें सॉर्ट कर रही थी. हम्म. नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडेबल, बट लाइक यू ऑलरेडी व्हेन यू बॉट इट यू पेड लाइक थोड़ा एक्स्ट्रा ना. जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है?
Okay, I'm back. Um, Sorry, I needed to sort like two, three things out. So sorry for making you wait, and thank you. मेरे लिए तो वो एक्स्ट्रा ही था यानी more than expected. Usually when I say फिर आपकी मर्जी, I usually expect, you know, a little less. I don't usually expect more. But ठीक है. But thank you for the follow as well, Class Rose. I just saw that notification. If you're here, let me know. लेकिन again, what I'm saying is उनका confidence इतना low है ना कि it doesn't feel like you're genuinely interested. You know, like you're just playing with their feelings. That's why there's so much of backlash and like push from their side. You know, थोड़ा time लगेगा लेकिन again हो जाएगा. I think I've said that in like my last reading as well. You know, if you reach out to her right now, she's going to be like very hostile about it. You know, उनको ऐसा लगेगा कि मेरे में क्या देख रहा है. To the point where, you know, it feels like it's not real. Am I audible? Have I been talking to myself the whole time? Oh my god. No, it seems like I'm audible. Um, hmm, mm-hmm. याद है मुझे. I remembers. My memory is amazing when it comes to such things, you know. The genuine things I need to remember, my brain goes blank then. Guards. Mm. Mm. कुछ भी नहीं करो. Just like be like, you know. Like, see, that is beyond your control. You cannot control what others do now. Mm. आज हो रही है अनुष्का, but they are all paid वाले. You know, you have to buy a reading to get a reading. But I think I'll be doing a free one on Thursday. Hmm. Bhaiya, do you have any more questions? Okay. I know all of you are my well wishers. ठीक है. तो here's something. ठीक है. मेरा कल कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही है. तो मुझे
कल इंटरव्यूज वो सब है, सो आई एम अ लिटिल नर्वस, बट आई नो कि हो जाएगा। उतना ट्रस्ट तो है, लेकिन आई वुड अप्रिशिएट इट, लाइक कि अगर आप लोग ना मुझे विश करें, अपने ब्लेसिंग्स मुझे दें। ठीक है, क्योंकि चैनल जो चल रहा है अभी, इससे जो भी मुझे मिलता है, कम्युनिटी, वो सब, तो क्या बोलते हैं, तो सब आप लोगों की दया से ही है, आप लोगों की ब्लेसिंग से ही है, तो हमारी ये नैया भी पार लगा दी हो। मैं तेलंगाना से हूँ, इसलिए मेरा ना हिंदी में थोड़ा तेलुगु का वो आता है, तेलुगु और उर्दू का हल्का सा ना इफेक्ट आता है। वो मुझ मेरे ऊपर, यानी मेरा उस पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन हो जाता है बस। किधर जाऊँ मैं? हाँ, मुझे वैसे ना उनका वो टेस्ट देना है, क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गई। मेरा ब्रेन ब्लैंक हो गया, क्या बोलते हैं, थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू। कुछ टेस्ट होता है ना, क्या टेस्ट बोलते हैं, कुछ टेस्ट लेता है ना, नाम भूल गई उसका, वो भी लेना है मुझे। आई थिंक कल 10 PM तक का टाइम है करने का, लेकिन आई वांट टू डू इट लाइक अभी, बिफोर आई गिव दोज इंटरव्यू। मैं दिमाग व्हेन एवर आई एम रीडिंग एंड ऑल दैट, मेरा दिमाग एकदम वो हो जाता है, लाइक जो चैनल करना है उसके अलावा कुछ आता नहीं है, विच इज़ आई थिंक गुड, कि जो सुनना है वही सुनोगे। कुछ बकर बकर नहीं सुनोगे मेरी, विच इज़ गुड, विच इज़ अ गुड ट्रेड फॉर अ रीडर। नहीं, मॉक टेस्ट नहीं है वो एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। मैथ्स के सम्स करने हमको प्रॉब्लम्स। उसका कुछ हैक होना चाहिए। नो एक्सटेंशंस अलाउड, उनको वो चाहिए, कुछ कुछ चाहिए, मुझे करना पड़ेगा वो, लेकिन सोने से पहले हम थिंकिंग कर दूँ, देखते हैं देखते हैं। लेकिन डू यू हैव लाइक एनी फॉलो अप क्वेश्चंस? आई थिंक उसके अलावा ना ऐसे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, लाइक बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ना इसको टाइम लगेगा, मैंने पहले भी बोला था टाइम लगेगा, इनको ना इतना इनसिक्योरिटी है कि ना शी वोंट इवन बिलीव कि ना एक्चुअल में जेन्युइनली समवन इज इंटरेस्टेड टाइप का, ऐसे एवे ही तो सब बोल देते हैं टाइप का है। उनको समझने में, पहचानने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं तो एवे ही लुट गया। वो ऐसे ही सताएंगे। I try to be on Tuesday, Thursday, and Saturday. Sunday is when I take off. छुट्टी होती है मेरी। पूरे काम से हम ऐसे ही पड़े रहते हैं सांड की तरह। मजाक कर रही हूँ। हाँ, तो क्या पढ़ना है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़ना है। हम्म, तो अभी क्वेश्चन नहीं है, तो आई विल गेट गोइंग। Thank you everyone for being here, for showing your support. I appreciate all of you.
Y'all are so amazing and supportive and kind and lovely. I hope I get to see all of you again. And wish me luck. All the best, boliye. I'm kidding. But bol do fir bhi. Anyways, as I was saying, I'll get going. ठीक है? Anyone जिनके पास रात हो रही है, शुभ रात्रि. Anyone who's going through mornings, good morning. I'll see you all next time. Bye bye. Meow.